बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास इंग्लिश 8th, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आप कैसे हैं? बेटा आज हमारे पास 8 स्टोरी है, यूनिट स्ट्रेंथ। बहुत आसान है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं आप। द फार्मर एंड हिज सन्स, आपने इसको याद करना है, राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आए रीडिंग करते हैं। वंस देयर वाज एन ओल्ड फार्मर, ही हैड 3 sons. They always quarreled with one another. He always advised them to live with love. His advice fell flat on them. He fell seriously ill. He sent for his sons. When they came, he gave them a bundle of sticks and asked them to break it. They tried one by one but failed to do so. The old man then untied the bundle and gave one stick to each and asked them to break the sticks. They broke the sticks easily. The old man picked up the pieces of the sticks and said, "If you are united, you are strong and powerful, like the bundle. No one can harm you. And if you are separated, others will ruin you, like these pieces of sticks." This had a good effect on them. After that, they never quarreled. Moral: unit strength, united you stand, divided you fall. बेटा अगेन इसकी नीचे ट्रांसलेशन दी हुई है पेज 270 और 271 पर। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ जाए आपने इसकी ट्रांसलेशन देख लेनी है, याद करना है, लिखने की प्रैक्टिस जरूर करनी है। थैंक यू, बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़।